वाओ, 0 व्यूअर्स। ओके कूल है, क्या बात करें। चलो स्टार्ट करते। आई डोंट थिंक कोई ज्वाइन कर रहा है हमें, सो आई टेल यू। यार हवा की आवाज़ की दिक्कत हो सकती है। आई थिंक आपको बता भी नहीं सकता मुझे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। हम्म, क्या करें। मैं फन ट्रिक करने वाला था, ठीक है। ओके सो लेट मी शो यू। आप लोग यहाँ पर या जो भी इसको बाद में देखिएगा, क्यों हो आप लोग यहाँ पर। अब यार मुझे माइक आवाज़ का पता नहीं कैसी आ रही है। ओके, लाइव क्वेश्चन आंसर करने वाले हम चैट जीपीटी के साथ में। सो आई एम जस्ट टाइपिंग, हाय आई हैव 8 years of experience in marketing. Ask me questions as a newcomer student maybe who wants to join this field. ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछता है। How did you even get into marketing? Was it planned or accidental? Good question. Thank you, ChatGPT. यार बहुत ही accidental था. So to be very honest, I started my career in business. I I wanted to be an entrepreneur. I wanted to be a businessman. It was back in 2016 when I started everything. मैं कॉलेज में था. So I tried business for a couple of years. कुछ ने कुछ चले कुछ नहीं चले, सही। बट बिजनेस में भी आई वॉज ऑलवेज एंजॉइंग द मार्केटिंग. मुझे मज़ा आ रहा था इन अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन मेकिंग कैंपेन्स फॉर माई ब्रांड. ठीक है, आई डिड अ लॉट ऑफ अमेजोन कैंपेन, आई डिड अ लॉट ऑफ फ्लिपकार्ट कैंपेन्स. ठीक है, एंड मेटा पे तो बहुत ही ज़्यादा. तो आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस एरिया, बट आई वॉज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. So when it was a time to move on from that part, and I decided I want to learn marketing in a very professional manner, and I wanted to see how the other brands or how the big brands are doing it. ठीक है, for example I was handling Vivo for a couple of years, so I wanted to learn how the brands like Vivo are doing it. See the brands, for the brands who has like 200 CR marketing budget yearly, how they are doing it. See, so उस learning को crave करते हुए I wanted to join the marketing field agencies. तो I went into those agencies. मैंने अपना resume तैयार किया. I did a couple of interviews. नहीं समझ में आया उनको मेरा style of working, but eventually there was one company who liked that I was coming from a startup background, एंड जिनको मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग पसंद आया, एंड दे हायर्ड मी, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट मेरी एजेंसीज में जर्नी स्टार्ट हो गई. ओके कूल. देयर आर सो मैनी एरिया, सोशल मीडिया, एसईओ, ब्रांडिंग, परफॉर्मेंस, कंटेंट, वेयर शुड आई स्टार्ट एज अ बिगनर. यार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है चैट जीपीटी. तो सी आई थिंक इनिशियली you need to understand all these areas. थोड़ा थोड़ा आपको सीखना सब पड़ेगा. ठीक है, if you are starting out you should learn what is social media, what is paid media. ठीक है, what is branding, what is SEO, performance, content influencer होता क्या है, and what would be the expectation. आपकी ज़िंदगी, आपका डे इन ऑफिस कैसा नज़र आएगा in all of these fields. ठीक है,
फिर यू हैव टू डिसाइड अगर आपको ये करने में मजा आ रहा है, इफ यू आर एंजॉइंग दिस, लेट्स से इन्फ्लुएंसर इज समथिंग यू वांट टू डू, ओके, तो इफ यू आर इनटू कंटेंट वॉचिंग, बिंज वॉचिंग, कि मैं यार इन्फ्लुएंसर्स मैं वैसे ही बहुत फॉलो करता हूँ, आई लव इन्फ्लुएंसर्स, आई नो इन्फ्लुएंसर्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं एंड ऑल, सो आई वुड से from there you can understand which is your field of interest, and then from that field of interest you can start building your knowledge as a professional into that particular field. Okay, is it an MBA or any form of degree important to succeed in this field? See, agencies में बिल्कुल भी नहीं है. Agencies में I would say you have to be graduate, yes, but a particular MBA degree in the field of marketing is not required. It's मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, it is all about the skills. It is not just about the degree, it's about the skills you need to know, you need to understand. और एक और चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में काफ़ी नया है, ठीक है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म होता जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इज द न्यू थिंग. और ये आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिग्री लेने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू द फील्ड ऑफ लेट्स से ब्रांड साइड, ठीक है, इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर अ ब्रांड, सिंस वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वीवो, so if you want to work on a Vivo as a brand, yes, definitely MBA is required. Also, if you want to do consultancy, if you want to join EY, if you want to join any big four, तो MBA is definitely required at that point. Agencies में नहीं है, and agencies are also very can also pay good amount of money to you. Cool है. What do marketing agency actually do on a daily basis? Good. काफ़ी लोगों को नहीं पता ये क्वेश्चन. सी हाउ डज इट वर्क? इट डिफर फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट. अल्टीमेटली यू आर इन द एजेंसी, यू आर सर्विंग योर क्लाइंट, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी क्लाइंट ले लो, ठीक है. फॉर एग्जांपल ड्रीम11 को एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो यू आर अ ड्रीम11 एजेंसी पार्टनर. अब क्लाइंट की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, दे ऑल्सो हैव देयर इंटरनल सिस्टम, देयर इंटरनल मीटिंग्स एंड ऑल. उसके बेसिस पे दे डिसाइड यार कि मेरा IPL आ रहा है, आई वांट टू डू समथिंग नियर द IPL, ओके, आई वांट टू डू समथिंग नियर द बिग, लेट्स से इस साल में एशिया कप आने वाला है, तो अराउंड द एशिया कप दे वांट टू डू समथिंग. तो एज ए पर्टिकुलर फेजेस में आपके पास कैंपेन्स आते हैं. सो यू विल रिसीव अ ब्रीफ फ्रॉम द क्लाइंट दैट दिस इज द पीरियड, दिस इज मे बी द TG इफ दे नो, एंड कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी आएगा, बट यू विल हैव अ स्मॉल ब्रीफ. बेस्ड ऑन द ब्रीफ यू हैव टू वर्क अराउंड योर थिंग. Let's take an example of paid campaign, because I am a paid media marketer. So how does it work? हमारे पास brief आया, we will start decoding the brief. What are the interest they are looking for? What kind of TG they want to go after? What kind of market they want to go after? Basis that, what is the consumption pattern of that particular market? लोग हमारी TG में क्या consume कर रहे हैं? हमारे लिए क्या better touch point रहेगा? If we want to let's say if you want to reach out to those particular people, तो हमारा क्या टच पॉइंट है, कहाँ पर वी शुड डिस्प्ले आवर एड कि वो उसको दिखेगा जो बंदा हमारी TG में है. अगेन थिंग, मल्टीपल टच पॉइंट शुड बी देयर. मेटा यूट्यूब के अलावा व्हाट कुड बी द थर्ड टच पॉइंट? लेट्स से फॉर एग्जांपल जियो सिनेमा कुड बी द थर्ड टच पॉइंट. और लेट्स से रिसेंटली क्योंकि ब्लिंकिट वगैरह या क्विक कॉमर्स के ऐप बहुत चल रहे हैं, तो दीज क्विक कॉमर्स कैन बी द another touch point. So basis all this information, your TG persona, your user understanding, basis all that, you will make a plan. If this plan have all this kind of let's say platforms, फिर उस platform का अपना क्या audience size है, what kind of audience we are looking for, how much percentage of the reach we want to go after, with what frequency. This also comes because of the budget, क्योंकि आपके पास you will definitely have a limited budget. So budget के basis पे you also have to take a decision कि which platform is better for me. For example, you're talking about Blinkit, so Blinkit and Zepto, maybe Swiggy, Instamart, इन तीनों में से किसी एक पे ही जाने का बजट है, तो किस पे जाना चाहिए. And to help you make this decision, there are so many tools, but you also have to use your own brain on this.
उसके अलावा फ्रीक्वेंसी होता है एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, लाइक आप टॉप फनल चला रहे हो, मिडिल फनल चला रहे हो, लोअर फनल चला रहे हो, उसके बेसिस पे बहुत चीज़ें डिपेंड आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11 है, आईपीएल की बात करें, सो दे वुड गो आफ्टर रीच एंड फ्रीक्वेंसी, दैट आई हैव मेड दिस कम्युनिकेशन, आई वांट टू गो एट द मैक्सिमम रीच पॉसिबल विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि जब आईपीएल आए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम 11 के बारे में जानें. ठीक है यार, 0 व्यूअर्स के साथ भी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. Okay, one more question. How important is to stay on top of trends? Do you follow any newsletter or creators for that? Uh, yes, see, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रेंड को फॉलो करना. ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया में यू शुड बी देयर ऑन द ट्रेंड. But if you talk about paid media marketing, so more than trend, we do movement marketing a lot. See, Indian Champions Trophy जीत लिया. This is a movement जो कई साल बाद आएगा. So you as a marketer or as a brand representative, you should not miss this movement. You have to capitalize. ठीक है. और let's say कुछ interesting हो गया या कुछ for example IPL आ रहा है. This is also a movement or a trend you can say. अब IPL आ रहा है, so your brand should, even if you are not present on the IPL, all the communication and the TG or the target audience should be around the cricket, क्योंकि it's a cricket season. ठीक है, क्रिकेट सीजन में आप कुछ और चलाओगे तो people will not remember that part. But क्रिकेट सीजन में यूजर आर ट्रेन टू वॉच क्रिकेट और cricket related advertisement, because we are watching this kind of stuff for so many years कि March to May तक cricket आएगा, IPL आएगा, and everyone gonna be talking about IPL or cricket for example. ठीक है, so you should be aware कि किस जगह पे, किस स्टेट में, if not national, if let's say तमिल है, आपका जनवरी में पोंगल आएगा, so you should aware of कि किस मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है. Now if your strategy is कि उसको आपको मूवमेंट मार्केटिंग में जा सकते हो तो जाओ, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट. ठीक है यार, आई थिंक वी डिड गुड. 13 मिनट हो गए हमें बात करते हुए. आई एम होपिंग कि जब ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो वी विल गेट मोर एंड मोर व्यूअर्स एंड वी विल हैव सम रियल क्वेश्चंस एज वेल. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.